हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लीडिंग यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस बुक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का टॉपिक हमारा है, आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज यूज्ड फर्स्ट बाय। ऑप्शन आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट the term biodiversity has been coined by. Answer is C. Next, biodiversity deals with. Answer is C. Next, biodiversity includes. Fourth, answer is D. Next, fifth, what are the 3 levels of biodiversity? Fifth, answer is D. Next, Convention of Biodiversity came into force on. Answer is A. Next, hotspot is related to. Answer A. Next, the term hotspot for high diversity ecological region was coined by. एट्थ का आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट है नाइन्थ, द टर्म हॉटस्पॉट फॉर हाई डाइवर्सिटी, सॉरी ये तो एट्थ था। नेक्स्ट है नाइन्थ, द नंबर ऑफ इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड इज. Answer is D. Next, hotspot of biodiversity are area with. Answer is B. Next, pickup zone of our country considered as hotspots of biodiversity are regarded as cradle of speciation. Answer is D. Next, a hotspots in India is. Answer is C. Next, which one is not observed in biodiversity hotspot? Answer is A. Next, hotspots of biodiversity means. फर्स्ट ऑप्शन, बाकी ऑप्शन शेयर है। इसका आंसर था ए वाला। ओके, नेक्स्ट, अल्फा डाइवर्सिटी इज बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट.
Answer is A. Next, biodiversity is determined by. Answer is D. Next, genetic diversity is related to. 17. Answer is C. Next, the identification of key biodiversity area has been initiated in. Answer is A. Next, decrease in species diversity in tropical countries in mainly due to. 19. Answer is C. Next, what is most effective way to conserve plant diversity of an area? Answer is C. Next, most biodiversity rich zone in India is. C. Answer C. Next, Biodiversity Act of India was passed by Parliament in. Answer D. Next, India's fourth national report to the Convention of Biological Diversity has been released on. Answer is A. Next, which pair of geographical area shows maximum diversity in our country? Answer is C. Next, which one is a hot spot of biodiversity? Answer is B. Next, 26. दो स्टेटमेंट्स हैं, बताओ कौन सा सही है. हाँ, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बता देते हैं कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं. आप क्वेश्चन देख सकते हो, आंसर मैं बता देती हूँ. जो भी बच्चे इस बुक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं, बस इसलिए. ओके. हाँ, 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला था, सॉरी उसके लिए. 26 का आंसर है सी. 27. The International Day of Biological Diversity is. Answer is D. Diversity of habitats over the total geographical area is. 28. Answer is C. Beta diversity is the diversity. Answer is B. हाँ, इसका आंसर था डी. 27. 28 का है, सॉरी 28 का था सी और 29 का है बी. नेक्स्ट 30. आंसर इज बी. 29 का भी था एंड इसका भी बी है. नेक्स्ट 31.
India became a party of Convention on Biodiversity in. Answer is A. Next, which one of the following has maximum genetic diversity in India? 32. Answer is D. Mango. Next, answer is D. 33. Answer D. Next, Indian shares in global species diversity is about. 34. Answer A. The term alpha diversity refers to. Answer is D. Next, Evil quartet is related to. Answer is A. Next, Nagoya Protocol deals with. Answer is B. Next, 38. Conservation of diversity means conservation of. Answer is A. Next, which of the following represent maximum number of species among global diversity? 39. Answer is A. Next, genetic diversity is fast diminishing due to. Answer is D. Next, maximum diversity is found in. Answer is C. Next, the number of plant species reported from India. Answer is B. Next, the number of animal species reported from India. 42 का B है, 43 का D. Next, India's share in global species diversity is about. D. 8%. Next, which one of the following have the highest number of species in nature? Answer is A. Next, how many biogeographical regions are present in India? Answer is D. Which of the following is a mega biodiversity region of the world? Answer is D. Who has proposed three domain system of classification? Answer is A. 48. 47 का D था, 48 का A. Next, 49. Select three domain from the following. Answer is B. Next, three domain system of classification is based on.
आंसर इज डी। ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एंड बायोडाइवर्सिटी में हमारे 50 क्वेश्चंस ही हैं। ओके, तो कल हम नेक्स्ट करते हैं इसके आगे। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।